would like you to remember two things. The first is that you should always remember the motherland and the contribution it has made in your nurturing. It is the soil, air and water of this land which makes you us what we are. We are just part of a whole, and that whole is India. Branches can flourish only till the tree is healthy. Do whatever you can to enhance the image of the country and its development. Do whatever you can to make India innovative and competitive. You must have read that Mr. Satya Nadella of Hyderabad had become the chief executive in Microsoft. It is definitely a good news. Most of you must be dreaming to reach to the height of Nadella and other such people. But my only advice is that create a similar enterprise here. Create a Microsoft. Create an Apple. Create a Google here in India. And then own it, manage it. Once again, I compliment SRM University for providing training and practical experience in new and emerging technologies, including nanotechnology. This will definitely help our country. The second thing which I would like you to remember is that there are very few who are able to reach such prestigious institutions. Against the total population of youth, there are very few are able to reach to any university. In fact, still there are only few who are able to reach to any credible educational system. This is our biggest challenge. I would like you to remember those less privileged brothers and sisters. I would like you to do whatever you can to help and empower them. Friends, we are a land which established the universities of Nalanda, Takshashila and Valbhi 1,000 years back. They were global institutions in that time. We are land which produced Aryabhatta and Brahmini. They were global pioneers in their fields. We are a land where acquiring knowledge and wisdom had been considered the prime task in the initial years of human life. We are a land where knowledge has been equated with wealth. We call it Vidya, Lakshmi, Gyan Dhan. It is unfortunate that we had to suffer the destruction of this legacy by the British. हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, न चोर हार्यम, न च राज्य हार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकार्य, वये कृते भर्धते एव नित्यम
विद्याधनम सर्वधने प्रधानम। हमारे यहां कहा गया है और कितने पुराने समय में बात कही गई है कि विद्याधन ये सर्वधनों में प्रधान धन है, क्योंकि वो एक ऐसा धन है जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता। ये ऐसा धन है जिसे अपने भाई भतीजे बहन कोई बांट नहीं सकता, ले जा नहीं सकता है। और ये एक ऐसा धन है जिसको कैरी करने के लिए कभी साथ में लोडर नहीं रखना पड़ता, वेटर नहीं रखना पड़ता, इसका कोई बोझ नहीं होता। यानी हमारे यहां शास्त्रोक्त दृष्टि से ज्ञान को, विद्या को कितना महत्व दिया गया है। It is even more unfortunate, even after 65 years of independence, we have not been able to focus on education. Education is important not only for individual's progress, not only for economic progress of the country, but also for nation building. Thus, we have to renew our commitment towards education. We have to commit ourselves to educate every child, whether a boy or a girl. We have to commit that we will not be behind any other country in terms of coverage or in quality in this sector. This era is an era of knowledge. Knowledge is going to be the biggest wealth with the citizens and the nations. This is also the most potent tool for fighting poverty. There is no reason why India should lag behind. We have the brightest mind. We have a number of philanthropists. Why should we there be only a few SRMs? Why such institution cannot be established at every nook and corner of this country? It is just a question of providing an enabling environment. The private enterprise is more than eager to enter into this field. I am personally quite convinced that we should give them a free hand. But I also believe that to make the beginning and to make it big and impressive, institution building has to begin with government. That is why I recently said that it is our commitment to establish an IIT, IIM and AIIMS in every state of our country. We are the youngest nation for the world. Just the population of our youth will be more than the population of whole Europe. In a few years from now, India will add another America in its population. We call it demographic dividend. However, it is a dividend provided we educate, train and put this resource at work. It is so sad to listen that none of our universities have global ranking. What is lacking with us? We have to identify and work upon it. The universities like SRM have started this process. Your efforts in this direction have proved that it is doable. You have proved that it is possible to set up and run global institutions
in India. भाइयों बहनों, हम जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कितने गर्व की बात है कि हम उस युग में जी रहे हैं जब भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। हम इस युग में जी रहे हैं जब हिंदुस्तान के 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35। कितना सौभाग्य हमारा। अगर इन भुजाओं में हुनर हो, इन नौजवानों को अवसर हो, मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, जो 60 साल में हम नहीं कर पाए वो 60 महीनों में कर सकते हैं। अगर हमें इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो भाइयों बहनों, 3 बातों पर अगर हम बल दें, हम दुनिया की किसी भी महाशक्ति की स्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। आज हाथ में डिग्री होने के बाद भी अगर स्किल नहीं है तो रोजगार नहीं मिलता है। आने वाले युग में, आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी सारी विश्व में दुनिया के किसी भी राजनेता को आप सुनोगे, वो एक बात पर बहुत आग्रह से बोल रहे हैं, दुनिया के सभी राजनेता, और वो अपने देश के भविष्य के लिए स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 65% पॉपुलेशन जिस देश में 35 से नीचे हो, ऊंची उड़ान के सपने हो, मजबूत भुजाएं हो, अगर उनके हाथ में हुनर दे दिया, स्किल दे दिया, उन्हें अवसर दे दी जाए तो दुनिया को कहां से कहां ले जा सकते हैं। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट। दूसरी आवश्यकता है स्पीड। हम जो काम 10 दिन में करने चाहिए, हम 10 साल लगा देते हैं। अगर नौजवान आता है तो गति आती है, नौजवान आता है तो ऊर्जा आती है, नौजवान आता है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है। बूढ़ा आदमी रिस्क नहीं ले सकता, वो 50 बार सोचता है, उसको 50 चीजें याद आती है। और इसलिए नौजवान साहस कर सकता है, नौजवान हिम्मत के साथ फैसले कर सकता है। और तीसरी बात है स्केल। हम बहुत छोटे रूप में सोचते हैं, विशाल सोचना, बड़ा सोचना, पता नहीं क्यों हमारी जवानी मुरझा गई है। दम होना चाहिए, स्केल। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम गर्व करते हैं, जितना जल्द हो सके 3 चीजों के साथ जुड़ने की जरूरत है। स्किल, स्पीड एंड स्केल। अगर इन 3 चीजों के साथ हम जुड़ते हैं, मुझे विश्वास है भाइयों बहनों, हम लोग बहुत सारा कुछ देश को दे सकते हैं। इन एडिशन टू मीटिंग द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रोथ, good knowledge base is also required to make our country and our economy productive, modern and competitive. India is a very huge, diverse country, but even more diverse is its natural resource base. We have coasts which need to be managed and developed. We have forests which need to be preserved and upgraded. We have mining wells
which has to be sustainably used. We have rivers which need to be clean and interlinked. We have the challenge of reducing our dependence of imports in many goods and services. We need to secure our sovereignty and integrity with most modern equipment. All this and much more lies in our own hands. It is we who are the Bharat Bhagya Vidhata. दिल्ली में बैठी हुई कोई सरकार भारत भाग्य विधाता नहीं होती है। हिंदुस्तान का हर मतदाता भारत भाग्य विधाता होता है। But to do all this, we need high and education system. We need scientific temper and technological tools. We need to invest in research and development. We need to encourage innovations. From my own experience of 12 years in government, I can say that it is all possible. मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। हमने एक अभी प्रयोग किया है जिसका लाभ आपके नौजवान उठा सकते हैं। हम एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आई क्रिएट एक इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे हैं। मिस्टर नारायण मूर्ति को हमने रिक्वेस्ट किया था उसके चेयरमैन के लिए, उन्होंने उस काम को संभाला है। हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी नौजवान इनोवेशन करता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हम उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे और उसके मन में जो पड़ा है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए अवसर दिया जाएगा और आगे चलकर के उसको फाइनेंशियल हेल्प हो और एक रेवेन्यू मॉडल बना करके कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में उसको कैसे पनपाया जाए और रिसर्च और इनोवेशन को हमारे नौजवान को अवसर मिले, उसके लिए हमने एक आई क्रिएट नाम के इंस्टीट्यूशन का आरंभ किया है। ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, इट विल बी इंक्यूबेशन सेंटर हम देश को देने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप में से भी इस प्रकार की जिनकी विधा है, कुछ करना चाहते हैं, उन नौजवानों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए देश के लिए हम भी कुछ करें। आई फील दैट the most important factor in making a change is that we have to empower and trust those who can do it. India is unfortunately passing through the phase of crisis of trust. Government are suffering from lack of trust towards citizens. A student is not trusted to self-attest his own certificates. A philanthropist is not trusted to create an institution of his dream. Technocrats and scientists prefer to go and work abroad. We are known for curtailing enterprise. A small company might at times does not want to become big because of regulatory issues. On the top of it, over the last decade, we have created a politics of aspiration. Without governance and administration to deliver it, this has now started eroding people's trust in governance itself. But friends, this is where real India comes in. Where we have been problems, we have emerged stronger. We have had reforms and revolutionaries from within the society. India knows how to make self-correction. We are blessed with a tradition of democracy where such corrections and changes are built in the system. India's today's crusaders are in its young men and women. The young generation of today is globally connected.
They know what is happening around the world. They want to see a developed India. They want to live in equitable and efficient India. And they want it fast. We have to be ready for this. We have to work for this. To achieve this, I particularly encourage the young men and women to actively participate in national affairs. घर बैठ के कुछ नहीं होगा, एक कदम आपको भी बढ़ना होगा. This will clear your vision to seek your own dreams. It will also give you the freedom and opportunity to realize them. मैं सोच रहा था, आप लोग SRM से परिचित हैं. For me, this SRM stand for S stand for selfless service, R research for nation building, M man making, not money making.